Hello everyone, welcome to the CommerceAchiever platform. With today's session, we are going to discuss about the UPSC Civil Services Commerce Optional Paper 2. So we are going to do the detailed discussion, and yes, we will take care in both the language Hindi and English. I know we have a lot of energetic people here, so I'll try to give you the best of this paper. And still, if anything missed out from my side, it's my humble request to ask in a comment section and get your query solved now here. सो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 का डिस्कशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स का डिस्कशन, पेपर का एनालिसिस, क्या रोल रहता है, हम उनको भी ऐसे पॉइंट्स को ब्रीफ आउटलाइन करेंगे, पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, 2020 को भी हमने कम्प्लीटली जो है डिटेल में डिस्कस किया था। आप पेपर का एनालिसिस जरूर देखें, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ डिस्कशन एंड व्हाई यू शुड गो विद द डिस्कशन और डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर? इट्स बिकॉज this give you, if we can take an example, that it give you from out of a big lot a small bit of an idea. For example, you have a ample of space like syllabus, and you have a very little time to revise and coverage. So on the basis of past paper, what you can do is you can take those creamy topics of the past papers and get into the very in-depth and detail of those past papers topics. You cannot memorize just just exactly these questions. Yes, it can help you as a value addition in case of your answer writing practice. It also give you a road map, and it give you a creamy picture of the topics, but we cannot say it as a rule of thumb because UPSC is full of surprises. So क्या इंपॉर्टेंस है इस पेपर को एनालिसिस करने का, क्यों समय बर्बाद करना चाहिए? भाई ये समय बर्बाद नहीं करना, आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम आपके सामने इस एनालिसिस को लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत कम समय है या आपने एग्ज़ाम के पहले कुछ चीज़ें हैं, नर्वसनेस हो जाती, टॉपिक्स नहीं रिवाइज होते हैं, तो न्यूज़ के अलावा जो हम लोग कवर करते हैं वो कवर करते हैं पास्ट पेपर्स में उठाए हुए टॉपिक्स को। पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को एक क्रीमी लेयर ऑफ टॉपिक मैं उन्हें नाम देती हूँ कि उन टॉपिक्स पे तो आपको कमांड 100% रखनी है, बट उसे रूल ऑफ थंब नहीं बनाना कि भाई वही है, क्योंकि आज के पेपर को जब हम देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि पास्ट पेपर्स को हम रूल ऑफ थंब नहीं बना सकते हैं, नहीं तो हम खा जाएंगे मात। लेकिन हाँ, उसे एक क्रीमी लेयर ऑफ टॉपिक करके बाकी सबके कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, बट ये नहीं कि आप बाकी टॉपिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उन्हें अवॉइड कर लें, क्योंकि अगर आज के पेपर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पास्ट पेपर्स जो क्रीमी टॉपिक्स थे उससे बहुत ही लीस्ट टॉपिक लिए गए हैं, बहुत ही कम टॉपिक लिए गए हैं, और ये समय आपका कीमती है। एक छोटी सी चूक आपका पूरा समय आपको जो है वेस्ट कर देगी, तो चूक नहीं करनी है, हमें दी बेस्ट होना है। मैक्सिमम टाइम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल में सेव करके आपको प्रीलिम्स और अपनी जीएस प्रिपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो मेरे से जितनी मैक्सिमम सपोर्ट होगा मैं आपको करूँगी। कोई क्वेरीज, टॉपिक से डिस्कशन आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सो वी हैव अ पेपर two in front of us. I hope you people know well about the specific instructions, and if have any doubt, do ask. So we have a section A and section B. So section A you have as an OB, which is called as an organization behavior, and OT, which is called as an organization theory. So some of you might ask many times that ma'am, I started with the OB, the right strategy is to cover this section A is first start with OT and then go with the OB, or if you have like a little bit base about these subjects and you have a good enough with the base subjects, so you can simultaneously like first you have to go with the OT at any and every cost, and then you can simultaneously like co-link your OB preparation. Okay, so गिव मी अ मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज। हमें ये उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अपेयर किया जा सकता है जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके दो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ओटी और ओबी। ओटी को हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बोलते हैं और ओबी को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए सेक्शन ए की,
जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ओटी कवर अप करना चाहिए और उसके बाद ओबी कवर अप करना चाहिए। और अगर आपकी कुछ अच्छी बेस बनी हुई है ऑलरेडी तो आप फिर भी कुछ पोर्शन पहले आपको ओटी करना है और उसके साथ साइमल्टेनियसली यानी संग संग आप ओबी की भी प्रिपरेशन एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट का कंप्लीट तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। कोई भी और डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन 150 वर्ड्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज द mandatory, or we can call it as a compulsory question. That means if you eliminate this question, you cannot eliminate and attempt some other questions on behalf of this question. So question number 1 and 5 are the compulsory from the examiner or UPSC perspective. Okay, so you cannot eliminate it. So first question is non-verbal communication. So many of you think, oh my god, from where we get this question, it's not in our syllabus. Yes, then that's why I told you UPSC is full of surprises. So might of you few of things get very pressurized and get into trouble if you have a bit line basic info, because it's a very general topic. If you have a basic info, you can just write about this. Okay, you can write about what is non-verbal and communication and non-verbal communication, give an example, and like you can just keep on value addition. But because of this only one question, I won't suggest you to get into a big fear. No need to be fear, because you will get one or two, or on an average in the bad side 3 questions as a full of surprises. But for your information, non-verbal communication is quite often you have learned in your class 11 12th. Okay, so it's a non-verbal communication which is specifically not the part of your syllabus, so we can mark it as another, but it is not it's a static question on a like basic one. Next question 1b is factor affecting quality of work life. So we have a topic of quality of work life. So yes, it's also been asked in a past paper, so we can talk it as a quality of work life is a creamy topic from the past paper. So it is again the static topic. Okay, so it is a static topic and it is related to your organization behavior subject. Okay, next you have a topic on transformational leadership. So transformational leadership, so it's again the topic of creamy topic. Okay, transformational leadership, it's from your leadership chapter and it is direct question, static question, we can call it a static question or you can call it as a direct questions, and from the subject of organization behavior. Okay, OB, clear? Okay, next we have sources of resistance of change. So we have resistance of change. This is also a creamy topic. So this is also your direct question. Okay, this is also related to your organization behavior. Okay, resistance to change. Next is power and authority. Again, a direct question. Okay, a creamy question, because there might be some questions we cannot say it will be creamy from this year, because when you go back into the past papers of other previous year, you don't find a direct question on the power and authority, but you find a like a statement form of questions there. So there is a statement form of question, so you cannot directly link with the power and authority. So it's a direct questions and related to your subject organization theory, that is OT. Okay, so question number 1 carries 5 parts, A, B, C, D, E. Even you attempt 1, 2 or none or all, it's a compulsory question. So give me a moment to conclude this question number 1 in other language. पहला नंबर क्वेश्चन है 150 शब्दों में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. आप हैरान होंगे भाई ये क्वेश्चन ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, और इसकी चिंता इतनी ज़्यादा आपको खा जाएगी कि जो चीज़ें आपके अच्छे फेवर में थी उन पे आप कम वेट देंगे. ये गलती मत करिएगा. यूपीएससी से सरप्राइज की तो उम्मीद हमेशा ही हमें करनी चाहिए. तो यहाँ पे एक सरप्राइज है, आप मिनिमम 1 से 3 सरप्राइजेस मान करके चल सकते हैं. तो उन सरप्राइजेस को वेट ना दे करके जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं उन पर ही फोकस करेंगे. और कुछ आधे ऐसे टॉपिक्स तो आपको बेसिकली आते होंगे जिनको आप वर्ड से और डॉट कनेक्ट करके लिख सकते हैं. इसीलिए इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि कई बार कुछ सरप्राइज आ जाता है
और वो सरप्राइज कई बार न्यूज़ के बेसिस पे होता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने पे क्या है, आप चैलेंजेस के लिए अपने ब्रेन को तैयार कर चुके होते हैं। यही वजह है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका जो है स्टैटिक पोर्शन, एक स्टैटिक ही टॉपिक है और आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट से है। ये क्रीमी टॉपिक हम इसे कह सकते हैं क्योंकि पास्ट पेपर्स में भी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। यानी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे अगर हम बोल दें कि ये तो क्रीमी टॉपिक है और काफी बार पिछले पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन, भाई ये तो चैप्टर का ही नाम है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, अब तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अब धीरे धीरे देख लीजिएगा, आप पूरा सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 70% तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये भी आपके लीडरशिप का टॉपिक है, स्टैटिक पोर्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट है। लीडरशिप तो एक चैप्टर का ही नाम है, यानी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। यस, क्योंकि चैप्टर से, उस चैप्टर से कई टॉपिक्स पूछे गए। तो अब मैं देखूंगी कि पास पेपर्स के बेसिस पे आपने क्रीमी टॉपिक के साथ साथ क्रीमी चैप्टर्स ही मिलते हैं आपको, और वो क्रीमी चैप्टर आपका सिलेबस ही है। ठीक है, उसकी भी एनालिसिस हम लेकर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी कि मैम पिछले 4-5 ईयर्स का एक कंपाइलेशन कंपैरेटिव चैप्टर्स का दे देंगे, तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा बिकॉज मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रेजेंट नहीं करना चाहती हूँ। सो आई वांट टू बी डीप एनालाइज ऑन ऑल दिस थिंग्स, और वो डीप एनालिसिस के बाद मैं उसको भी लेकर के आऊंगी। डी पार्ट था आपका रेसिस्टेंस टू चेंज का, भाई ये भी एक चैप्टर का ही नाम है, उसके अंदर ये एक टॉपिक पूछ लिया उसके सोर्सेज के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है। ई पार्ट है पावर एंड अथॉरिटी। पावर वाला चैप्टर पे तो कितने बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आए हैं, अथॉरिटी पे भी कई बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आए हैं, तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि टॉपिक तो आपका चैप्टर ही है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। So question number 2 is the optional one. If you know, do the well. And even if you appear a question number A, B, C of any one, any two, or all of the three, so it will be counted as an attempt. And this will be counted on the FIFO basis. Like if you attempt question number 1 and 5 together, and then you have to attempt 3 questions, one from each section and other from any section. So suppose you have attempted question number 1, and then you attempted question number 2A and 3B. So it will counted as a 3 questions you have already attempted, and now you left with only one option from the B section. Okay, so I hope you're getting. Okay, so question number 2 is the optional one, and it's a statement question. We can see that it's a statement type question, you can see there. Okay, so the environment is a major contingency for which an organization must plan and to which it must adapt. Plan and adapt, and the examiner is expecting an explanation about this particular statement. So it's a environment related topic, and that's from OT. Organization theory, you have an environment related topic on, and this is a statement wise question. For statement wise, we generally take what I helped you do with understanding of the author's definition and author's sayings in between, so that it prepare your brain to write these kind of answers holistically. Okay, so organization theory. Next question number 2B, discuss the important structural dimension of organization. So you have to discuss about the structural dimensions of the organization. So it is also related to your organization theory. Okay, a bit twisted question. Okay, and next we can see question number 2C, rules are different from norms. In the light of this statement, explain the importance of rules and norms from the organizational design perspective. Now the creamy topic is organizational design. If you can see the organizational design, but do you think if you learned only about the organizational design you can write it? No, this is the complete syllabus chapter, organization design, and it is related to your organization theory, a statement wise question. So it is a statement and it is related to your OD, that means organization theory related. Okay, organization design related, which is from the subject organization
theory. Team already prepared an analysis how many questions came from OT, OB, HRM or IR. So it's my suggestions to go and refer that also. Okay, so it is a statement type questions. Question number 2C. So give me a moment to conclude in the other language. Question number 2. Question number 2A आपका ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आप इसे स्किप करके दूसरे ऑप्शनल का बेनिफिट ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2A आपका पहला जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है. ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जनरली आप तभी अच्छे से लिख पाते हैं जब आपने ऑथर्स या स्कॉलर्स की वर्डिक्स को समझने की प्रैक्टिस की होती है, उसे रिवाइज किया जाता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2B. आपका ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का ऑन कि आपसे स्ट्रक्चरल डायमेंशन पूछा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2C. आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के चैप्टर से. स्टेटमेंट के मदद से आपसे रूल्स एंड नॉर्म्स के इंपॉर्टेंस को पूछा गया है. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे, ये पूरा चैप्टर ही है ना आपका ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करके, तो उसके बारे में आपको सारी नॉलेज लेनी है. ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2A, B and C and optional 1. Next, moving ahead towards the question number 3. So 3 is again the optional one. So 3A, an organization without goal is like a rudderless ship. Okay, comment and explain the importance of the goals. That means if you can see, there are two parts of this question. It asks you the comment on the statement and it also asked you about the importance of the goal. So if you little bit in a difficult zone to explain the statement and you have a lack of lot of words and word related to the subject matter, so you can just focus the question into two parts, split it into a two part, attempt the first part and second part is separately as an importance of goal. Okay, so this is from your chapter organizational goals. Okay, organizational goals. Okay, it's from your chapter organizational goals. It is statement type and it is related to your organization theory subject. Okay, next we have question number 3B. Explain the objectives and the phases, both objective and phases, involved in establishing a quality circle system of an organization. So quality circle system. So quality circle is now an important because you have an n number of topics in your syllabus. So now these paper will help you that which topics you need to be more keen observer. That means a quality circle is a good creamy topic. It's came in almost every year, quality circle. So quality circle is like a statement wise question has been asked. You in this question you have asked me now about the objective and phases of quality circle system for an organization. So quality circle, I highlighted the quality circle. It's the name of the chapter of the quality circle. Subject is related to the organization behavior. Clear? Next we have 2C. Organic structure are opposite to mechanistic structure. Many times I taught you in the classes also that this is a very base topic or the other type of organization structure. So it is from your chapter of organization structure. Okay, organization structure, which is a part of your organization theory. Okay, so if we conclude question number 3, so we have two statement type question and one is direct question. Okay, so give me a moment to conclude in other language. आपका question number 3 जो है optional होता है. Question number 3A जो है आपका वो organization goal पे है. ऑर्गेनाइजेशन गोल आपका कई बार इस एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपका जो टॉपिक है एक ऑर्गेनाइजेशन गोल है. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है, दो पार्ट में क्वेश्चन है. पहला तो आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने को बोल दिया और दूसरा गोल्स के इंपॉर्टेंस बताने को बोला है. क्वेश्चन नंबर 3B जो है आपका वो क्वालिटी सर्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस का पॉइंट है आपके. ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. आपके ऑब्जेक्टिव पूछे और फेसेस पूछे हैं. तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पार्ट है. ठीक है, और इसमें बोले भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अपोजिट है मैकेनिस्टिक का और आपको एक तरीके से उनके डिफरेंस को हाईलाइट करना है, उनको डिस्कस करना है यहाँ पे. ठीक है, देखिए हम सॉल्यूशंस की बातें यहाँ पे नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट और ब्रीफ आउटलाइन कर रही क्योंकि ये पेपर का एनालिसिस हो रहा है. राइट, next question number 4, it's an optional but you have to attempt at least one question among the 2, 3 and 4. Okay, and rest second one is your choice. Question number 4A, explain how promotion can be used as a tool to enhance job performance. So now it is related to the promotion.
Okay, or you can take it as an job enhancement. Okay, job enhancement or performance. So you can see that it is the combining knowledge of HRM and your OB. Okay, so in the organizations theory. Okay, so you can take it as a combination of the knowledge, explain how promotion can be used as a tool to enhance the job performance. Okay, next, and it is a 10 marks question. You cannot make a rule of thumb. Now see, it's a question number first is 10 marks, your question number third is a 10 marks. Okay, so next, question number 4b. What is the relevance of transactional analysis in modern organization? Explain the key types of transactions. Okay, so key type of transactions, it depends what you are taking. It is advisable to add the example also here. So the topic is related to the creamy topic, transactional analysis. So transactional analysis so far was not the creamy topic as per the past paper, but now with this paper, now it becomes the creamy topic as a transactional analysis. Topic is related to your organization behavior. Next, describe the path goal theory of leadership. Path goal theory. Yeah, path goal theory directly been asked in the past paper as one of the important theory of the leadership, and it is associated with the leadership style, and it is related to your OB subject. Clear? So give me a moment to conclude in. सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शनल होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आपको एक क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, दूसरा आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो आपको बोला कि भाई प्रमोशन को स्पेसिफिकली फोकस करते हुए कहा गया है कि प्रमोशन को एक टूल कैसे माना जाए ताकि जॉब की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके. क्वेश्चन नंबर 4B जो है आपका वो ट्रांजेक्शन एनालिसिस OB से रिलेटेड है. ठीक है, उसका रिलेवेंस पूछा गया है आज के ऑर्गेनाइजेशंस पे और उसके ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4C जो है आपका वो पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप पे पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, और ये क्रीमी टॉपिक है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा सका है. ठीक है, तो अगर हम सेक्शन A का कंक्लूजन ड्रॉ करें तो कई सारे टॉपिक आपको क्रीमी टॉपिक जो पास पेपर से मिल रहे हैं वो दिखेंगे, और कई टॉपिक जो क्रीमी टॉपिक इस अटेम्प्ट में बन गए. यानी हम कह सकते हैं यूपीएससी सरप्राइजेस है, इसलिए किसी भी चीज को रूल ऑफ थंब मान करके नहीं चलेंगे. ठीक है, हाँ, मैक्सिमम वेटेज हम क्रीमी टॉपिक्स को देंगे, और अगर मानिए हमने क्रीमी टॉपिक को 100% वेट दिया तो नॉन क्रीमी टॉपिक्स को हमें ऐसे डिवाइड करना होगा कि किसको 100 देना है, फिर बैलेंस हम 80% देंगे, एंड देन कुछ को हम 50 से लेस में रख सकते हैं. सो यू हैव टू प्लान, आपको ऐसे प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करनी होगी जो कि बहुत ही रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होती है. सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेक्शन ए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you learn that if you can correlate this paper with the past paper. So there are few topics which are creamy from the past years, and few it will become creamy in this year itself. That means that they were the new topic as per the examination viewpoint. So do not make anything as a rule of thumb for UPSC, because UPSC loves surprises. So we do. Okay, now let's move ahead with section B. Section B includes your two subjects, HRM, that is your human resource management, and IR, that is industrial relation. So before going ahead with the detail of questions on individually basis, I would like to introduce with the HRM. HRM is one of the static syllabus, completely on the static mode, and it involves a lot of understanding. But once you understood the topic in HRM, you will be expert in writing of it. But in case of an IR, it's most carry the factual and news related factual informations. So it is very important to correlate your IR preparation with your polity preparation as per the constitution saying, DPSP, or your fundamental rights sayings, and along with the various laws and regulations, and what the verdicts of your like your ILO also. So you can link IR paper with your current affairs, or you can say you can also co-link with your GS paper 3. Okay, so let's begin with the question number 5. So first, direct question, strike versus lockout. Okay, it's a creamy topic, came in past year, so we cannot ignore this topic, strike and lockout. And this is topic I took in 1,000 times in the news booklets, because in every year we find somewhere at the strike, somewhere at the lockouts. So a topic which is related to the industrial relation, and lot in news. It was a lot in news in the past years. Okay. Next, because if you have learned about the news updates, like because
a lot of news was there when the employees on in strike, and when Air India was on, employees were in strike, and then there was n news on the strike and lockouts. Next, question number 5b is on performance management. It's a direct question, performance management, which is related to your subject human resource management. Okay, next is your philosophy of worker participation in management. So WPM is always a favorite topic of the examiner. So you have to be well prepared with WPM, worker participation in management, co-linked with your constitution verdicts also. Okay, so WPM is your topic related to an industrial relation. Okay, next is the scope of industrial relation, direct question on IR. Labor absenteeism, direct question on an IR. So let's conclude the question number 5. The heavy weightage is given to an IR, and partial weightage is very least weightage is given to an HRM, and it's a mandatory question. So I already give you that you have to correlate your IR with the news updates. Okay, so give me a moment to conclude in other language. Question number 5 कंपलसरी क्वेश्चन है, 5 पार्ट में है, ABCDE. पहला क्वेश्चन स्ट्राइक वर्सेस लॉकआउट में है, कंप्लीटली न्यूज़ पे था, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है न्यूज़ में ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट. सेकंड आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, HRM का डायरेक्ट क्वेश्चन है. थर्ड आपका वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा ये टॉपिक रहा है, और IR का सिलेबस वैसे ही बहुत लिमिटेड है, तो कुछ हर टॉपिक आपके लिए वैसे ही वो क्रीमी टॉपिक हैं. नेक्स्ट है स्कोप पूछा गया है IR का, और लेबर एब्सेंटिज्म डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके IR के. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6A ऑप्शनल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग. सो इट्स टॉपिक ऑन training. So it's asked you the importance and type, so we can call it as a direct question from HRM. Okay, next we have what is a good job description. List some method of collecting job description. So again you can see the job description as a topic, and it's from HRM, and we can see it's a direct question. Till now it was not a creamy topic, it was not asked in a past paper, so as weightage, but with this attempt you can see now it become a creamy topic. Okay, job description. Next, what is placement? Okay, explain the components of employee induction. So we can call this an employee induction program. So it was one of the creamy topic related to the human resource management, and yes, it's a direct question. So we didn't find any statement here in question number 6A, B or C. Okay, so all three questions related to an HRM, and if you covered your HRM at the safest zone, you can attempt this question on the safe zone and you on the safe side. Okay, so it's a good thing that you have all three questions from an HRM. Okay, that's from the syllabus, no need of news here, only the good understanding and good coverage, and you just able to attempt these questions. Okay, so give me a moment to conclude in other language. So question number 6 आपको ऑप्शनल है, आता है तो करेंगे, नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट और HRM का है, बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन पहला क्वेश्चन आपका ट्रेडिंग पे है जो कि एक क्रीमी टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन जॉब डिस्क्रिप्शन पे जो इस बार से ज्यादा क्रीमी हो गया अब, और तीसरा क्वेश्चन आपका प्लेसमेंट और एम्प्लॉय इंडक्शन पे है. ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपके HRM और डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपने HRM पे ही बहुत अच्छी कमांड रखी होगी तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेफ जोन पे आ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट so that are used to be selection of an employee. So it is related to the HRM on the selection of an employee, and you can check it as a direct question. Okay, on the selection of an employee. So it was not the creamy topic so far, examiner never gave a keen interest on the selection, but from this attempt now it's become a creamy topic. Next, discuss the implications of Maslow need hierarchy theory and Herzberg two-factor theory in relation to employee motivation and compensation. So Maslow and Herzberg are quite very announced and very creamy topics, okay, which is related to the direct question of your human resource management. Okay, question number 7B. Next, question number 7C, differentiate between the traditional and modern method of performance measure. So perform appraisal, is one of the creamy topic even in the past paper, performance appraisal, which is related to your human resource management, and again it's a direct question. So if you see again question number 7, all three question from HRM and all three question are direct. So you can find yourself on the safe zone if you cover well enough your HRM. Okay, so give me a moment to conclude another language.
क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑप्शनल होता है, ए बी सी 3 पार्ट हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, तीनों ए बी सी जो है एचआरएम के क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर एचआरएम पे अच्छी कमांड करके रखिए तो काफ़ी सेफ जोन पे आ गए हैं इस पेपर से आप। पहला क्वेश्चन है आपकी सिलेक्शन के ऊपर एम्प्लॉय के, ठीक है। अभी तक इस पे इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहा था पास्ट में एग्जामिनर का, लेकिन अब हम इसको वेट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी बोली गई है, ये हमेशा से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी रही है, ठीक है। और तीसरा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी काफी आपका क्रीमी टॉपिक रहा है पास पेपर्स में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8A, trade union are an impediment to the growth of industry. Do you agree? Critically evaluate the role of trade union in the present context. So the topic is related to the trade union, IR, and it was in very news. Yes, it was in news, and that's why I was 100% sure this question will be welcomed. So trade union, because there are n number of strikes were there, and in which you have you must be well aware against the when there is an agricultural law, that was a good role of the union over there. So it's the big news, and this is not the main reason why this question is here. There are n number of factors in news that trade union played a big role to tackle the disputes between the management and the workers. Okay, so industrial relation related to the news. Next is industrial conflict is basically a struggle between a management and worker. Examine this statement. A statement type question you can see, and it is related to your IR. Okay, related to your conflict, industrial conflict. Okay, next and the last one is, what is the importance of industrial relation? How, explain how industrial relation can be enhanced in organization, is your IR. So question number 8, A, B, C, all are related to your industrial relations. Probably weightage given to the news updates. On the basis of news, the questions has been asked in your paper. So as far as I can concern, this paper is giving you a good quality weightage, that if you have a even good command with any of these subjects, you can do well in this paper. Okay, industrial relation. So give me a moment to conclude in other language, and then we conclude the whole paper. Okay, so क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑप्शनल है, ए बी सी 3 पार्ट हैं, तीनों क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन के हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के टॉपिक्स को वेटेज दिया गया है, क्योंकि न्यूज़ में आए हुए टॉपिक को ही इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रखा हुआ है। तीनों क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज हैं, एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी को, तो सेक्शन बी आपका जो है इक्वली वेटेज गिवन है आपके HRM एंड IR को, ठीक है। लेकिन कंपलसरी में इन्होंने IR को ज़्यादा वेट दे दिया है, तो कोई भी सब्जेक्ट चयन करना बहुत ही मुश्किल होगा, किसी एक सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पास्ट पेपर्स में देखा हो तो मैक्सिमम केस में इक्वल वेटेज या HRM को वेट दिया जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने IR को वेट दे दिया है। तो कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है। आपने नहीं देखा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो एक फेवरेट टॉपिक हमेशा से रहता है, वो भी मिसिंग है यहाँ पे। तो हम किसी भी टॉपिक को रूल ऑफ थंब नहीं बना के चल सकते हैं, बट हाँ, हमें उसे कितना वेटेज देना है उसको डिसाइड करना होगा, स्ट्रैटेजिकली प्लान करना होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स को आप एक क्रीमी टॉपिक का वेट दें, बट उसके अलावा आप बाकी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीता हुआ वक्त है वो लौट के नहीं आएगा। और UPSC के लिए आप ये मान करके चलें, वो सरप्राइज देने का बहुत ज़्यादा ही आदी है, और कोई भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, उन क्रीमी टॉपिक्स को 100% वेट दें, तो बाकी आपने 80% एंड 50% वेटेज देना होगा। 0% वेटेज आप किसी भी टॉपिक को ना दें, रिस्क इतना बड़ा ना लें, ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द होल पेपर, एंड आई वांट टू ड्रॉ your attention here, and I would like to request on the basis of past year papers, and if you can see, there is no question related to a management by objective, and there can be n topics which I can draw up in your face, but there is no questions like that, so you cannot make anything as a rule of thumb. And if you look the past papers, the question number 5 carries a equal weightage to IR and HRM, or sometime more to the HRM, but this time we came up with the IR. So you cannot decide that you should go with HRM only and not to IR, or with the IR not to HRM. No, don't do that. It might be give you a lot of risk.
So if you see on the basis of past papers, you have to play very strategically. Yes, on the basis of past papers, you can choose the creamy topic in which you have to give 100% weightage, and then you have to allot 80% weightage and then 50%. Do not do the risk of giving 0% weightage to any of the topic. It's my personally humble request, because UPSC loves surprises and shocks both. So I hope I help you to understand, give you the fullest information about your UPSC CSE mains 2021 commerce optional paper 2, and I able to give you the deep insight about these topics, these question paper. And we also drawed that how many questions came from which subject. There is an analysis, I you can refer that also. Okay, so in still, if any query is unsolved and if you like to know anything, do ask in our comment section. Keep working hard, because time is very precious. You cannot get this back. And I know you people, some of you might be a working professional having other responsibilities you are also taking care. So you people know very well the time is very, very precious. The moment you are giving in the preparation for this optional, that means you already qualified, you are ready to qualify your prelims. You qualified the prelims, now you are in the mains, and in the mains optional give you rank, but you have to simultaneously strategically plan your other GS paper. So on here I'm just trying to give you a little bit support in your whole journey of UPSC CSE to help you a way through with your optional. But my help is to take maximum benefit from here, give least time to your optional, and get the maximum. So take care, keep working hard, and do ask your queries if any left in your comment section. Take care, bye bye, and Jai Hind.